वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत है। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 माइनिंग एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 16 डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि आपने बाकी के पार्ट्स अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करके आप बाकी के पार्ट्स देख सकते हैं। लास्ट पार्ट की तरह ही इस पार्ट में भी हमने गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इस वीडियो की PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए अब देर न करते हुए अपना माइनिंग ज्ञान और बढ़ाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपोजर ऑफ वीक ग्रुप इन जंक्शंस ऑफ डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट इन ए कोल माइन कैन बी डिक्रीज्ड बाय ऑप्शन ए increasing dimensions of panel barrier, option B staging side walls, option C increasing support density at junctions, option D staggering the junctions. Right answer is option D, exposure of weak group in junctions of development district in a coal mine can be decreased by staggering the junctions. Next question is Lenz algorithm is applied to determine option A mill cutoff grade, option B mine production rate, option C operating cost, option D ultimate pitch. Right answer is option A, Lenz algorithm is applied to determine mill cutoff grade. Next question is semi-variogram modeling is used for reserve estimation of mineral deposits by option A polygon method, option B distance weighting method, option C geostatistical method, option D nearest neighbor method. Right answer is option C, semi-variogram modeling is used for reserve estimation of mineral deposit by geostatistical method. Next question is a deeply seated ore body dips at 70 degree having an average width of 60 meter. The ore body, hanging wall and foot wall are competent. The suitable stopping method for this ore body is option A post pillar cut and fill, option B shrinkage stopping, option C transverse sublevel caving, option D transverse sublevel open stopping. Right answer is option D. In above condition, the suitable stopping method for this ore body is transverse sublevel open stopping. Next question is the yellow buoy formed due to acid mine drainage mainly consists of option A ferrous hydroxide, option B ferrous sulfate, option C ferric hydroxide, option D ferric sulfate. Right answer is option C. The yellow buoy formed due to acid mine drainage mainly consists of ferric hydroxide. Next question is identify the correct statement. Nonel is used for surface connection of the blast holes in order to option A achieve better water resistance over detonating fuse, option B have a precise delay timing, option C provide noiseless shock front movement, option D avoid deflagration. Right answer is option C. Nonel is used for surface connection of the blast holes in order to provide noiseless shock front movement. Next question is parallel holes at right angles to the face with some holes uncharged are associated with the following short hole pattern. Option A drag cut, option B wedge cut, option C pyramid cut, option D burned cut. Right answer is option D. Parallel holes at right angle to the face with some holes uncharged are associated with burn cut pattern. Next question is the support system followed along the gop edge in a deploying panel is. Deploying panel में gop edge के along कौन सा support system follow किया जाता है? Option A rope stitching, option B cable bolting, option C wooden or steel chalk, option D hydraulic prop. Right answer is option C. The support system followed along the gop edge in a deploying panel is wooden or steel chalk. इसके अलावा कुछ अन्य सपोर्टिंग मेथड के नाम याद रखिएगा जो फ्रेशली एक्सपोज्ड रूप को सपोर्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे सफारी सपोर्ट, फ्रिक्शन प्रॉप्स, हाइड्रोलिक प्रॉप्स विथ और विदाउट लिंक बार, पिट प्रॉप्स, स्क्रू प्रॉप्स, ट्रायंगुलर टेबुलर स्टील एंड वुडन चॉक्स, square tabular steel chocks with wooden slippers, roof bolts, roof stitching. Next question is in metalliferous mines the sublevel interval does not depends on option A capacity of drilling equipment, option B capacity of loading equipment, option C strength of rip pillar,
ऑप्शन डी स्ट्रेंथ ऑफ वॉल रॉक। राइट आंसर इज ऑप्शन बी मेटलिफेरस माइन में सब लेवल इंटरवल लोडिंग इक्विपमेंट के कैपेसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडरग्राउंड कोल माइंस आर इन प्रिंसिपल वेंटिलेटेड बाय एग्जॉस्टिंग सिस्टम सो दैट ऑप्शन ए स्पॉन्टेनियस हीटिंग रिस्क इज reduced, ऑप्शन बी fumes can be quickly removed in case of an underground fire, option C build of methane concentration is decreased, option D cool and fresh intake air can enter underground. Right answer is option C. Underground coal mines are in principle ventilated by exhausting system so that build up methane concentration is decreased. Next question is identify the wrong statement pit bottom airlock. Option A prevents the short circuiting of air when the flow is reversed in coal mines. Option B has at least 3 doors. Option C has at least one door that has provision of latching. Option D all doors are in principally designed to open towards high pressure side of the air. Here the wrong statement is has at least one door that has provision for latching. So the right answer is option C. Next question is identify the wrong statement. The temperature inversion of the atmosphere in surface mines aggravates the problem of option A airborne dust, option B noise, option C ground vibrations, option D visibility. The temperature inversion of the atmosphere in surface mines not aggravates the problem of ground vibration. So here the wrong statement is ground vibration. So the right answer is option C. Next question is out of the support categories given for an underground coal mine, identify the active support. Option A wire mesh, option B shotcrete, option C fully grouted roof bolt, option D hydraulic prop. राइट आंसर इज ऑप्शन डी। दिए गए सपोर्ट कैटेगरीज में से जो कि अंडरग्राउंड कोल माइन में उपयोग किए जाते हैं हाइड्रोलिक प्रॉप एक्टिव सपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैसिव सैंडस्टोन इन इमीडिएट रूप डिलेज द लोकल फॉल इन द गोप ऑफ ए कोल माइन अंडर दिस कंडीशंस क्रशिंग ऑफ पिलर एट आउटबे साइड इज कॉल्ड। ऑप्शन ए कोल बम, ऑप्शन बी ओवरराइडिंग ऑफ पिलर्स, ऑप्शन सी स्टीफनिंग ऑफ पिलर्स, ऑप्शन डी स्पेलिंग ऑफ पिलर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी massive sandstone in immediate roof delays the local fall in the gope of a coal mine. Under these conditions, crushing of pillar at outbay side is called overriding of pillars. Next question is the excess pore pressure in backfill material in a cut and fill stop leads to option A reduction in strength of wall rock, option B enhancement of bearing strength of fill, option C loss of shear resistance of fill, option D prevention of progressive failure of crown pillar. Right answer is option C. The excess pore pressure in backfill material in a cut and fill stop leads to loss of shear resistance of fill. Next question is the primary purpose of cut holes for blasting in an underground drivage is to option A provide additional preface, option B have smooth surface after blasting, option C prevent overbreakage, option D reduce noise. Right answer is option A. The primary purpose of cut holes for blasting in an underground drivage is to provide additional preface. Next question is in fully mechanized board and pillar mining system, winning of coal and its transportation from the face is commonly carried out with combination of option A continuous miner, shuttle car, feeder breaker and belt conveyor, option B continuous miner, LHD, feeder breaker and chain conveyor, option C continuous miner, SDL, feeder breaker and belt conveyor, option D continuous miner, shuttle car, feeder breaker and chain conveyor. एक कंटिन्यूस माइनर के साथ 2 शटल कार और एक फीडर ब्रेकर यूज होता है जो कि बेल्ट कन्वेयर से कनेक्टेड होता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इन फुल्ली मैकेनाइज्ड बोर्ड एंड पिलर माइनिंग सिस्टम, विनिंग ऑफ कोल एंड इट्स ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द फेस इज कॉमनली कैरिड आउट विथ कॉम्बिनेशन ऑफ कंटिन्यूस माइनर, शटल कार, फीडर ब्रेकर एंड बेल्ट कन्वेयर। कंटिन्यूस माइनर में 3 यूनिट होता है, कटिंग यूनिट, गैदरिंग यूनिट, कन्वेइंग यूनिट। कटिंग यूनिट, दिस यूनिट्स कट द कोल up to depth of 0.6 meter which falls on the floor. Gathering unit, this unit gathers the coal at the floor level and transfer to the conveying unit. Third है conveying unit. Conveying unit transfer the coal
to the shuttle car. कंटिन्यूस माइनर 3 टाइप का होता है, रिपर टाइप, बोरर टाइप, ऑगर टाइप। कंटिन्यूस माइनर यूज़ करने के कई सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग आर टोटली एलिमिनेटेड, बेटर रूप कंट्रोल एट द फेस, रेट ऑफ फेस एडवांस इज हाई, लेस साइकिल टाइम फॉर वेनिंग कोल, एक्सीडेंट आर reduced, high output main per shift, concentrated work with better supervision. Next question is, in cut and fill stop, the main purpose of backfilling is to option A, reduce ore dilation, option B, prevent high stress concentration in field domain, option C, prevent displacement due to dilation of fractured wall rock, option D, improve ore rehandling. Right answer is option C. In cut and fill stop, the main purpose of backfilling is to prevent displacement due to dilation of fractured wall rock. Next question is, which one of the following is the most likely mode of slope failure for wedge dam? Option A, circular, option B, wedge, option C, plane, option D, toppling. Right answer is option A. Circular failure is the most likely mode of slope failure for wedge dam. Next question is, in a mine wedge dam of pH 5.2 can be neutralized by adding option A, urea, option B, calcium carbonate, option C, sulfuric acid, option D, sodium carbonate. Right answer is option B. A mine wedge dam of pH 5.2 can be neutralized by adding calcium carbonate. So that's all for today. Thanks for watching. If you like the video, hit the like button, share this video and subscribe our YouTube channel for more mining related videos.